Hello and welcome to 12 Minutes to Clash. My name is Nehil, your coach for verbal ability. A lot of people have asked me this question: what are the best management courses after 12th? I agree, IPMAT is by far the best. But what else apart from that? So, guys, today we'll take a look at if you're not willing to get into IPMAT or if you're not able to clear IPMAT, what else can you do? Right? So, as I said, I'm going to rate all the courses, based on what's best and their ROI. ROI is return on investment. कितना लगाओगे उससे कितना वापस मिलेगा, वो भी तो भैया मसला तो वही है, वो तो इम्पोर्टेंट है ना. तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट व्हिच वी कीप टॉकिंग अबाउट. इट्स अ 5 year कोर्स, एमबीए प्लस बीबीए प्लस एमबीए. 3 साल का बीबीए करते हैं, फिर 2 साल का एमबीए करते हैं, एंड यू गेट branded from IIM Indore. You can get IIM Rohtak. इन दोनों के अलग एग्जाम होते हैं, इंदौर और रोहतक का. वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो मैंने बताया था कौन से कॉलेज में कौन से कोर्सेज हैं और कौन से एग्जाम्स. If you write the JIPMAT exam, you can go into Ranchi, Bodh Gaya, Jammu or Sirmaur. Mind you, all of them are IIMs. So a brand of IIM will hold you in a very very good stead. इसीलिए 18 to 35 lakhs per annum का आपका पैकेज लगता है. That would depend on which IIM you pass out of course, right? But this is what you can expect. Best for consulting, finance, product management and general management. इन सब चीजों के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कोर्स है. आई थिंक विदाउट डाउट दिस इज बाय फार द बेस्ट कोर्स, बिकॉज यू 5 साल में आपकी एजुकेशन खत्म हो गई और आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि आपके पास एक डिग्री है फ्रॉम IIM. If you move on, the second course that you can think of is BBA, which is Bachelor's of Business Administration. IPMAT कोर्स आने से पहले यही होता था, ये सबसे अच्छा कोर्स होता था. Then IPMAT took over. Why? Because IPMAT is offering BBA plus MBA. इसके बाद भी generally you have to go for an MBA. Duration is 3 years. Again, वही 3 साल BBA कोर्स है, IPMAT वाला first half. Okay. शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, बाय फार द बेस्ट. लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने, याद होगा आपको. नारसी मोंजी के बारे में बताया था मैंने आपको. नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफर्स दिस कोर्स. Symbiosis Center for Management Studies offers this course. Christ University also offers this course. Guru Gobind Singh Indraprasth University also has this course on offer. Average package is 6 to 15 lakh per year, but if you see, it says higher after an MBA. So generally, after doing a BBA, people tend to go for an MBA for a better package, right? वही कमी तो दूर करी IPMAT ने. IPMAT में बोलो भाई तुम्हें देखो MBA तो करना ही है, BBA के साथ हम MBA करके ही तुम्हें निकाल लेते हैं बाहर. That's why IPMAT is the most sought after course, but this is also a very very good course. Excellent for product management, management consulting and finance. Moving on, next is BMS, which is the Bachelor of Management Studies. It's very similar to BBA but offered mainly by Mumbai University colleges, right? Bachelor of Management Studies BBA जैसे ही होता है, बस मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज देता है. Top colleges include Shahid Sukhdev College of Business Studies, of course, वो तो भाई. St. Xavier's, one of the best colleges in Mumbai. HR College of Commerce and Economics. It is excellent if you're looking for a future in business analyst, management consultant or strategy analyst. ठीक है. Next we have, अभी तो हमने BBA देखा था, BBA, MBA and BMS. Next you have BCom plus an MBA. It is a traditional but a strong pathway. पहले बहुत कॉमन होता था, लोग BCom करते थे, बैचलर्स इन कॉमर्स. कॉमर्स के बाद मार्केटिंग या फाइनेंस में MBA, है ना. टॉप कॉलेजेस फॉर BCom आर Sriram College of Commerce, Hansraj College and Loyola College. Loyola is in Chennai. Excellent for finance, accounting, investment banking और CA बनने के लिए भी लोगों, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी आप लोग BCom ही लेते हैं, ठीक है. This really helps you in a long way. अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है, you want to be a CA, which is also a very very lucrative field. Okay, next we have an integrated degree which is BBA plus LLB. A lot of people are following this as well. आपने पहले BBA किया, फिर आपने लॉ कर लिया. Now अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो आपको थोड़ा बहुत बिजनेस एक्यूमेन भी होना चाहिए और लॉ तो आना ही चाहिए. So if you're willing to go and get into corporate law,
which is again a very sought after field and a very high paying one as well. BBA, LLB will stand you in good stead. Business law, compliance, legal consulting में भी this degree would help. Top universities for those: National Law University Delhi, NLU Delhi तो यार of course आपको पता ही है ना. National Law School of India University, Symbiosis Law School Pune also is a really good college to get this degree. Next we have BBA in Business Analytics or Digital Business. यहाँ पे क्या होता है, you get high growth specialization with strong demand. It's based on, देखो, high growth specialization with strong demand. What am I talking about? Digital business. With the advent of everything digital, if you have a good know-how of digital business, you are obviously ahead as far as technology is concerned. So that way, it's a very lucrative thing. Top institutes is Narsi Monji Institute of Management Studies, again in Mumbai, Christ University, again in Mumbai, and Flame University. Careers that you can look forward to: business analyst, product analyst, marketing analyst, or consulting. These are the things you can look forward to. Okay. Next, we have, this is again interesting. This is a very long-standing long-standing course. BHM, Bachelor's of Hotel Management. ठीक है? There was a time when there was I would say a spike in the number of people getting to hotel management. Ideal for hospitality, guys. Growing field है hospitality भी. With the advent of people making more money and people willing to travel so much, hospitality, I personally feel, will boom in the future. तो ये भी एक अच्छा field हो सकता है. Luxury brands, hotels, airlines, tourism, right? Top institutes, undoubtedly, Institute of Hotel Management, Pusa, India's best. Next is Welcome Group Graduate School of Hotel Administration. Welcome Group, same ITC जिन्होंने मौर्या शेरेटन बनाया, ठीक है? I personally feel going forward in the future, this will have a very big impact on the people around. Best entrance exam to appear for, I think we discussed this in the last class. I will just quickly reiterate. IPMAT, of course, IIM के लिए. JIPMAT, again, IIM के लिए. CUET, UG, BBA, BMS, BCom at many universities. सुखदेव भी यहीं से जाएंगे, CUET से ही जाएंगे. Symbiosis के लिए you have to write the SET. NPAT for MMIMS, BBA, NMIMS is Narsi Monji. क्राइस्ट एंट्रेंस के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एक अलग टेस्ट होता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. अपेरेंटली वो भी CUET ही होता है. UGAT, वेरियस BBA कॉलेजेस. नाउ हाईएस्ट ROI is रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जितना पैसा आप लगा रहे हो उतना पैसा आपको वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? IPM, IIMs, yes, definitely best ROI, hands down. Symbiosis, SSC, BS, BMS, BBA, also pretty good. होता क्या है, when you do these courses, you end up eventually doing an MBA. तो आपका ROI भी more or less वैसा ही हो जाता है जैसा IPMAT के बाद से. But given that you do an MBA, I'm not saying always, but 7 out of 10 times आपको MBA लगता ही है उसके बाद. BCom plus MBA, again very good ROI, क्योंकि आपके पास CA बनने का भी एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे. NMIMS से अगर आप BBA करते हैं, ROI इतना कम है क्योंकि NMIMS की फीस बहुत ज्यादा है. ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न अच्छा है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट भी उतना ही अच्छा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवरऑल तो कम हो जाएगा, राइट? क्राइस्ट BBA also has a decent return on investment. इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं. पहले आप अपना कोर्स डिसाइड कीजिए. इन्वेस्टमेंट कैसे, रिटर्न कैसे बढ़ाएंगे, that's for later. Which course is best for different career goals? Now your course will also align with your career goals. आपको करना क्या है लाइफ में, क्योंकि IPMAT एक अच्छा करियर ऑप्शन है. इसका ये भी नहीं कि IPMAT कर लेंगे. खुद सोचो, what do you want from life? अगर आपको CU जनरल मैनेजमेंट में जाना है तो IPM is a good idea. मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए भी IPM अच्छा है. इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको करना है BBA, BCom. प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए भी BBA, IPM अच्छा है. एंटरप्रेन्योरशिप, BBA, BMS और IPM तो सबके लिए अच्छा है, ठीक है. फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है तो BBA, BMS would also suffice, right? IPM 5 साल का कोर्स है. अप्रोक्सीमेट फीस 28 to 35 लाख, एवरेज पैकेज 18 to 25 लाख.
Again, this is more or less ROI वाली बात है, so I'll quickly just take you through it. बाकी you can come back and visit this anytime. BBA will take you 3 years. This is what you'll get, approximately 10 to 12 lakhs, 6 to 12 lakh top colleges. BMS is 3 years. It will, if only, see, mind you, when I say BMS, BBA, approximate total fees, and this is what you'll be receiving after you've passed out. So fees is 0.5 to 3 lakhs and 8 to 12 lakh का आपका annual package लगता है. BCom plus MBA, this is a very very good, I would say pack or package. BCom plus MBA. UG का 30,000 से 2 lakhs लगता है, plus MBA 2 to 30 lakhs depending on which college you're from. You can easily expect 20 to 35 lakhs from top B schools. Okay. Now mind you, this is the average package. It may vary. इससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है. BBA LLB करते हैं, 10 से 20 लाख लगेगा, 10 to 18 लाख पर एनम का आपका गारंटीड पैकेज है. बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल बिजनेस अगर आप करते हैं फ्रॉम NMIMS और क्राइस्ट, you will be spending 6 to 15 lakhs and you will be getting back about 8 to 15 lakh per annum as your salary. BBA in finance and marketing, NMIMS, Christ. See, कॉलेज से बहुत फर्क पड़ता है. तो BBA तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बट अगर आप BBA NMIMS से कर रहे हो या क्राइस्ट से कर रहे हो या Xavier से कर रहे हो, उसकी बात ही अलग हो जाती है. ठीक है. 5 to 12 lakhs is your expenditure and you'll be receiving about 6 to 12 lakh of annual package. होटल मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, 4 साल का कोर्स है, माइंड यू. 3 to 10 lakh इन्वेस्टमेंट है और 5 to 10 lakhs is what you get from it. Entrance exam we've already discussed. I'm not going to go through this again. You can just take a look. Moving on, guys, there's one thing very important that I'd like to discuss with you, which I haven't so far, and which you should also consider. Now, IIM Kozhikode is actually offering a degree which is Bachelor of Management Studies. 4 साल की डिग्री है, ठीक है, IIM Kozhikode से. It's BMS, but it's 4 years. Okay. For this, you have to write an exam known as IIM BMS 80, which is Business Management Studies Aptitude Test. मैंने इसके बारे में बात क्यों नहीं करी? क्योंकि अभी इसके बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है. We don't know the ROI, we don't know the placements, we don't know anything about it yet. But from whatever little I've garnered knowledge or whatever experience I have, I would like to vouch for it that this would also give you a real good standing outside. See, there will be the name of IIM attached. IIM Kozhikode is one of the top institutes in India. अभी इसका ROI क्या है हमें पता नहीं है. But if you were to ask me, should you go for this course? I would say yes. Right? I did not discuss this क्योंकि मेरे पास अभी डेटा नहीं है. The course has only started last year. 2025 में शुरू हुआ है, तो अभी इसका कोई बैच पास आउट ही नहीं हुआ है. So we can't really say anything about the future, but IIM Kozhikode is a trusted brand. So guys, I would recommend that this, after IPMAT, this is also a really really good course which you can actually go for. Right? That's it from my end right now. Thank you so much.